तमाम साथियों को याली मदद याली मदद. Let's start on our ilm wa amal, knowledge and practice, part 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulai mehरबान मदद फरमा. या mulai mehरबान मदद फरमा. या mulai mehरबान मदद फरमा. मदद फरमा. अल्लाहुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा. या रहमान या रहीम. 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 नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम. तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला. तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला. या मौला मेहरबान रहम कर मौला. मदद फरमा मौला. या मौला हमारे करीब आ जा मौला. या मौला मेहरबान हमारे करीब आ जा मौला. और करीब आ जा मौला. या मौला अपना दस्त मुबारक हम गरीबों पर रख मौला. कि तेरी शफकत के साये में मौला, तेरी दुआओं के साये में मौला, तेरे नूर की रोशनी के तहत मौला हम इस सिरातुल मुस्तकीम पर चल सके मौला. या मौला मेहरबान मदद मौला. मदद मौला. नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज करते हैं. हम जमात खाने के कुछ आदाब को, कुछ रस्मात को हम पढ़ रहे थे. एक सवाल की तरह कि जमात खाने किस वक्त जाना चाहिए. हालांकि सवाल बड़ा अजीब है लेकिन बड़ा मुफीद है. As we all know and remember, we were in the subject of Jamaat Khana. As a question, what time should we go to Jamaat Khana? Even though question is amazing or funny, but so relevant to our subject. I believe this Garib and AZIZ have talked about this before, but still this would be a good time to talk about it again. As a reminder to those who have been listening to us for a long time and to those who have never have joined our session. What time should we go to Jamaat Khana? Before we answer that, let's look at our practice. Normally, if you are in Jamaat Khana 5 or 10 minutes before the dua, you will notice that hardly 10-20% of the Jamaat who would regularly come in the dua, they would not be present. Just before a 1 minute or 2 minutes, you will see hundreds and hundreds and hundreds of people will enter the Jamaat Khana. They will try to rush toward the Mukhi Sahib for dua, tobo tobo. If not, they will rush toward their place to sit.
and without giving a second thought, a sajda, without having a comfortable sitting, the dua starts. About halfway through the dua, they are trying to get comfortable in their sitting. They're still looking around. They're still trying to make their way into the dua. By the time they are comfortable, we are in the third, fourth, fifth, even sixth part, because it only takes about 6 minutes for dua to end. Out of that, it took about 3, 4, 5 minutes for us to be comfortable in our place. Now, what do you think? Think about that for a second, okay? Now, another practice we have noticed that there are some Jamaati member, they come an hour early, 30 minutes early, 45 minutes early, and not all, but some of them are not there for tasbih, giryazari, or to focus, but there for the purpose of socializing, or they are khidmat guzar. They came because they have a duty in shoes company, in the Nandi committee, setting up the parts, parking lot, outside the door, etc., etc. We are not talking about khidmat guzar. We are talking about those who are inside the prayer halls, but still the intention is to socialize before the dua starts. And sometime, unfortunately, they will be talking very loud, not realizing that there are few who has come early for the purpose of tasbih, giryazari, and sajud. There are few, they are preparing themselves for the dua, not realizing that they are socializing, and sometimes loudly, and most of the time very disturbance, very much they bring a disturbance, loud noises, sometimes loud laugh. पहले इसको उर्दू में बयान करता चलो कि जमात खाने किस वक्त आना चाहिए। पहले हम उस सवाल का जवाब दें, हम देखें कि हमने क्या देखा आज तक। हमने देखा कि दुआ की 1-2 मिनट कबल तक जमात खाना खाली पड़ा होता है, 1-2 लाइन होती है शायद, और 1 मिनट या 2 मिनट कबल लोग सैकड़ों की तादाद में दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर जमात खाने में दाखिल होते हैं, सैकड़ों की तादाद में। अगर मौका है तो मुखी साहब के पास जाकर दुआ करा लिया, अगर नहीं है तो अपनी जगह ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब उनको जगह मिल जाती है और बैठ जाते हैं, तब तक दुआ का आगाज हो चुका होता है। अभी उसने अपने घुटने भी ठीक नहीं किए होते हैं, अभी तक उन्होंने अपनी जगह को मुकम्मल तौर पर पकड़ा भी नहीं होता है, आराम से बैठे भी नहीं होते हैं। ना सिर्फ दुआ का आगाज हो जाता है, बल्कि दुआ के 2-4 पार्ट निकल भी जाते हैं, क्योंकि दुआ सिर्फ 6 मिनट की है,
जिसमें से 2-4 मिनट पाँव को ठीक करते करते निकल गए। ये एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले जमात खाने में आ जाते हैं। उसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक जो इसलिए जल्दी आ जाते हैं ताकि वहां पर बैठकर कुछ गपशप हो जाए, कुछ बातें हो जाए, कुछ दोस्तों से मिल लें। और फिर दूसरे वो होते हैं जो खिदमत गुजार होते हैं। वो जल्दी इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी शूज कंपनी में ड्यूटी होती है, उनकी नांदी में ड्यूटी होती है, उनकी दरवाजे पे ड्यूटी होती है, पार्किंग लॉट में ड्यूटी होती है, वगैरह वगैरह। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जमात खाने के अंदर आकर बैठकर इसी नीयत से आए होते हैं कि गपशप करेंगे, कुछ जल्दी चले जाते हैं और गपशप करेंगे। इस दौरानिए में वो ये नहीं देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जमात खाने में जल्दी इसलिए आए हैं कि वो तस्वीर कर सके, गिरियावजारी कर सके, सजूद कर सके, अपने नियत को, अपने ध्यान को जमा सके। और इसकी वजह से कभी कभार जमात खाने में बहुत अफरा तफरी, शोर, बातें और कह के लगाने की आवाजें आती है। और बहुत सारे लोग या कुछ लोग जो तस्वीर वगैरह पढ़ते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। यहां तक कि जब गिनान भी शुरू हो जाता है तब भी ये लोग बातें करते रहते हैं। नाउ let's come to the question, what time should we come to jamaat khana? To answer, to answer, what is your purpose of coming to jamaat khana? First question, what is your purpose of coming to jamaat khana? If your purpose was to pass half hour or 1 hour or hour and a half, then it really does not matter what time you come to jamaat khana. इससे बात को समझने के लिए कि किस वक्त जमात खाने में आना चाहिए, तो सवाल पहले अपने आप से पूछना होगा कि जमात खाने जाने का मकसद क्या था। अगर जमात खाने जाने का मकसद गपशप करना था तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप जमात खाने कितने बजे आते हैं, घंटा पहले आते हैं, आधा घंटा पहले आते हैं, 1 मिनट पहले आते हैं। अगर आप टाइम पास करने के लिए जमात खाने में आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बजे आए। That brings us to the second question. If your intention was, your niyat was to be one with the Imam, to have the didar of the Imam, to focus on your dua, on your prayer, on your soul, on your akhirat. If that is the focus, that is the niyat, then I would recommend at least, at least 15 minutes before the dua time. At least 15 minutes before the dua time. And we will talk about it. What will you do for that 15 minutes? अगर आपकी नीयत जमात खाने में दीदार था, इमाम की कुर्बत थी, गिरियाजारी और तस्बीहात थी, दुआ के अंदर एक होना था और रूहानी फायदा हासिल करना था, तो नाचीज की रिकमेंडेशन होगी कि कम से कम 15 मिनट पहले आप जमात खाने आ जाएं।
अब ये 15 मिनट में क्या करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So what will you do if your niyat, your intention was to be one with the Imam, to benefit your soul? When you come in, as most of the people, they would like to ask for their forgiveness. You will go to the part, you will ask for tobo tobo, mafi, forgiveness, and then you will come and sit, find a comfortable place for yourself. You will make yourself comfortable couple of minutes, 3 minutes, and then you will focus on your niyat with sajda, with sajda. Submission, the key to all of the prayers. Submission, sajda, is the key to all of the prayers. With sajda, you may ask, Ya Mola Bapa, please help me. Ya Mola Bapa, I have come to your home to seek your help and your didar and your closeness. Ya Mola Bapa, I am sinful. Do not look at my sin, look at my submission, my sajda. Do not look at my sin, look at my submission, my sajda. Be kind to me and help me. Bring me closer to your nur, to your didar. Do some tasbih. Whatever tasbih you like. Does not matter. Whatever tasbih you wish. If you could, if it's possible for you, shed a tear or two. Shed a tear or two. Do some more sajda. When announcement comes, Allah Miriya Duano time થયો છે. Remember, submission is the key to all prayers. Start your dua with the sajda. Bismillah, you go in the sajda. Mukhi Sahib jo Amar Hazir Imam jo, you come out of the sajda. And you are now one with your dua. This is not new. We had talked about this before. Practice, practice, practice. What we just did, we practiced for 15 minutes before the actual prayers. Practice. Submission and then dua. Practice, submission and then dua. आए उर्दू के अंदर. आप 15 मिनट क्या करेंगे पहले आकर. अक्सर लोगों की आदत होती है पहले वो अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, तोबो कर लेते हैं, फिर आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं. सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप सजदा करें, यानी कि अपने आप को इमाम के हुजूर में गिरा दें, सजदे के अंदर चले जाएं और कुछ दुआओं के साथ क्या करेंगे सजदे में. या मौला बापा, बराए मेहरबानी इस गरीब और नाचीज की मदद फरमा. मैं बहुत ही गुनहगार हूं, मैं मानता हूं, लेकिन तू मेरे गुनाहों की तरफ नहीं देखना, तू मेरे इस सजदे की तरफ देखना, मेरी इत्तेहाद की तरफ देखना, मेरे गुनाहों की तरफ ना देखना.
मेरे सजदे को कबूल करते हुए मेरी मदद को आ जा। अगर हो सके तो एक दो आंसू भी बहा लें, फिर कुछ देर सजदे के बाद जो भी आपकी पसंदीदा तस्वीर हो, जो भी आपकी पसंदीदा तस्वीर हो, आप अपनी तस्वीरात के अंदर मशगूल हो जाएं। तस्वीरात करते रहें जब तक के आवाज नहीं आती है, दुआ का अनाउंसमेंट नहीं होता है, बिस्मिल्लाह। जब मुखी साहब कहे बिस्मिल्लाह, आप दोबारा से सजदे में चले जाएं। याद रखें, सजदा इमाम की कुर्बत की गारंटी है। सजदा इमाम की कुर्बत की गारंटी है। इत्तेहाद में ही इमाम की कुर्बत है। आप सजदे में रहें जब तक के बिस्मिल्लाह, मुखी साहब जो अमर, अमर हाजिर इमाम जो, आप सजदे से सर उठा लें। आपने क्या किया कि आपने वो काम किया जिसके बारे में हमने 3 साल से प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप 15 मिनट पहले आकर दुआ में एक दिल होने के लिए प्रैक्टिस की आपने, और प्रैक्टिस के बाद आप दुआ में शामिल होंगे। आप सोचें अब आपकी दुआ कैसी होगी, आपका ध्यान कितना लगेगा दुआ में, इमाम आपसे कितना करीब होगा, इमाम किस तरह से आपकी मदद करेगा। We understand this? This is the question about the timing. Because when you come all of the sudden, it does not give you the room to practice, to submit yourself, to concentrate in your dua. That is not the way. That is not the way. You should come early and you should focus, you should submit, and you should start your dua with submission, with sajda. And that is the A, the timing of the Jamaat Khana. Number 2, Dua Kararwi, Tobo Tobo. There are multiple questions in this one question. And this question has come from you, the listeners. Someone asked, should I always go to Mukhi Sahib for dua? Second question came, should I do my Tobo Tobo before the dua or after the dua? What an amazing question. The amazing part in this one was that people who was asking question, they are not 10-year-old children. They are not teenagers. They are not young, but they are 40, 50, 60-year-old. They are asking this question. And that teaches us, that teaches me a lot of things. After all of these years, we still have this question. And it's not a bad question. Do not take it incorrectly. That is a good question. As long as you ask question that shows that you are willing to learn. You are willing to learn. That is what I take from your question. And therefore, I love you for that. That shows me you are humble. That shows me you are willing to learn. And I have always encouraged the friends, brother, sister on this line to ask
question. So now there are two questions. Should I do the dua before the dua? Should I do my tobo before the dua or after the dua? Or should I go to Mukhi Sahib or should I go to any part? Two questions. Again, I would say, what is your niyat? Remember, this is very individual and very personal. What is your niyat when you came to Jamaat Khana? If your niyat was gossiping, I would say wait until Jamaat Khana is over. So you can ask for forgiveness of your sin before you go home, because not only we are sinful, but we sat in the Jamaat Khana and we were gossiping. So we are taking lot of sin with us. So if that was the purpose of coming to Jamaat Khana, to socialize and to gossip, then my recommendation would be to wait until after the Jamaat Khana. So at least when you leave, you will have not taken any sin with you. But joke aside, our peer have taught us, our tariqah has taught us, our missionaries, our bhagas, our elites, our teachers has taught us that because we have the burden of the entire day and we must have committed lot of sin, we are coming in Jamaat Khana with a great weight of sin on our soul, in our mind, on our heart. So I would recommend, do your tobo first. Ask for forgiveness first. So when you sit in your submission, in your sajda, in your tasbih, in your dua, in your gnan, you will sit there with a pure heart. If you believe all of your sin are wiped away, all your sin are cleansed, you sit with a pure heart. That would be my recommendation. You see, it went all the way back to what our niyat was. Our intention was to come to Jamaat Khana. यहाँ पर उर्दू में इसको बताता चलूं कि पहला क्वेश्चन था कि हमको दुआ पहले करानी, तो वो पहले कराना या जमात खाना के बाद कराना। तो नाचीज ने पूछा कि आपका जमात खाने आने का मकसद क्या था। अगर आपका जमात खाने आने का मकसद गिला गिबत बातें शोर मस्ती मजाक ये था, तो फिर मैं कहूंगा कि आप आखिरी में दुआ कराना, आप आखिरी में दुआ कराना। ऐसा ना हो कि हम जमात खाने आए और गुनाहों की पोटली उठा के घर पे जाएं, क्योंकि आपने जमात खाने आकर कोई दुआ नहीं पढ़ी, आपने गिला गिबत की, जमात खाने आके कोई भी सवाब नहीं कमाया, आपने गिला गिबत पंचायत और दूसरों की बुराइयों के अंदर पूरा वक्त गुजार दिया। तो फिर आप ऐसा करें, आखिरी में दुआ कराएं, ताकि कम से कम आप गुनाहों की पोटली को लेकर घर पे ना जाएं। सवाब तो छोड़ दें, सवाब तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो जमात खाने आए ही थे गिला गिबत करने के लिए, बुराइयां करने के लिए, बातें करने के लिए, हंसने के लिए। हम जमात खाने तो आए ही नहीं थे दुआ पढ़ने के लिए, हमारी नियत ही नहीं थी वो तो फिर क्या करेंगे आप, आखिर में दुआ कराएंगे, ताकि सवाब तो ना कमाए, कम से कम गुनाह को लेकर तो घर पे ना जाएं। लेकिन अगर आपकी नीयत दुआ की थी, आपकी नीयत
सवाब कमाने की थी, आपकी नीयत दीदार और रूह के फायदे की थी, तो फिर आप सुने गिनान में क्या फरमाया गया, इमाम ने क्या फरमाया, हमारे भगतों ने, हमारे वाइजों ने क्या फरमाया। उन्होंने कहा आप पहले अपने गुनाहों की माफी मांग लें, क्योंकि सारा दिन के गुनाहों का बोझ हमारे सर पर होता है, हमारे दिल पर होता है। हम एक भारी दिल लेकर जमाखाने पहुंचे होते हैं। तो फिर अच्छा होगा कि पहले हम अपने गुनाहों की माफी तलब कर लें, ताकि हम एक क्लीन, प्योर, साफ सुथरा दिल लेकर जमात खाने के अंदर सजदे करते हुए, तस्बीह करते हुए, गिरिया उजारी करते हुए, सजदा करते हुए दुआ में शामिल हो जाए। ये तरीका हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दाइयों ने, हमारे पीरों ने सिखाया है। तो आपने दोबारा देखा कि सबका आखिर में ये नतीजा निकला कि हमारी नीयत क्या थी जमात खाने जाने की, उसके ऊपर से ये जवाब आपके सामने आया। Okay. So second question was, should we go to Mukhi Sahib directly, or can we go to any part in the front? Now this opinion is only my personal opinion. You do what pleases you, because this is the matter of Iman. This is a matter of faith. This is a matter of belief. So I can only and only can give you my opinion. You do you. You do as you believe and as you see fit for yourself. Because this is very individual and very personal according to each one of us believe, iman, faith. My Garib, humble opinion, my Garib opinion is that you go wherever is convenient for you, wherever the line is very short, so you can quickly get to your seat and you can quickly start your tasbih. You can quickly start your practice, your sajda, without wasting any time. You go to wherever the line is short, so you do not waste your time. As each one of the it does not matter which part you go to, as the niyat is to ask for the forgiveness from the Imam Zaman. Each one of those are sitting there with Amr of the Imam, with the Amr of the Mukhi Sahib, and therefore they are equally
sitting on the part, and your niyat oversees all of that. Your niyat was to ask for the forgiveness of the Imam Zaman. So it doesn't matter. But that is my opinion. You do whatever helps you believe. So you understand, right? You do you. You do what you like. But the fact is that every single person sitting on a part is with the Amr of the Imam, and over all of that, your niyat is for the asking of the forgiveness from the Imam Zaman. उर्दू में बताते चलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुखी साहब के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं. हाँ, आपका यकीन है, आपका ईमान है कि हमको मुखी के पास ही जाना चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं है. आपका जो भी दिल चाहे, आपका जो भी ईमान कहे, आपका जो भी यकीन हो, वो आप करें. उसको मैं नहीं बदल सकता हूं और ना ही बदलने की कोई जरूरत है. लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो पाठ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब इमाम के अमर और मुखी के अमर से बैठे हुए हैं. और याद रखें कि हमारी नियत उससे ऊपर है. हमारी नियत इमाम जमान के हुजूर में माफी मांगना है और इमाम बख्शने वाला है. अगर ये बात है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से पार्ट पर जाते हैं. बल्कि आप वो पार्ट जहां पर छोटे में छोटी लाइन हो ताकि आपका वक्त जाया ना हो, आप जल्दी से अपनी नियत को कबूल करवाएं, अपनी माफी तलब करें और इमाम पर यकीन रखें कि उसने आपको माफ कर दिया. और फिर जाकर आप अपनी तस्बीह, अपने सजदे, अपनी गिरियावजारी में मशगूल हो जाएं और वक्त को जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नियत जो है वो काउंट होती है, वो गिनी जाती है, ना कि आप कौन से पार्ट पर गए थे. लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा, आपका दिल क्या बोलता है, आपका यकीन क्या है, वो आप करें. आपके यकीन पर है वो, ना कि मेरे कहने के ऊपर. तो आपने देखा कुछ इल्म है जो हम कहते कि नहीं ये सही है, ये गलत है. ये एक ऐसे मकाम आता है जहां पर ईमान की बात आती है, तो आपका दिल जो चाहे, आपका ईमान जो है वो आप करें और वही दुरुस्त है, ना कि जो मैं कहता हूं. आपका दिल, आपका ईमान जो कहता है वो दुरुस्त है. So we are understood this part. There was another question long time back. Nobody asked today, but there was a question. Should we look at Mukhi Sahib when we are saying Tobo Tobo? Should we look at in the eyes of Mukhi Sahib? Or should we look at the Mola Baba's picture? Should we look up? Should we look down? Should we close our eyes? Should we keep our eyes open? There was a question, and this was a long time ago. Again, you do what you believe. Mukhi Sahib, or the person sitting on the part, is with the Amr of the Imam. If you are repenting, if you are asking for forgiveness, if you are true in your Tobo Tobo, if you are true in your Mafi, look in the person's eye. Look in that person's eye on the part and ask for forgiveness. That is the right way. Look in that person's eye. Accept your sin. Feel sorry.
feel regretful, feel that you are sinful. Don't shy away. Look into his eye and ask for forgiveness. So may Mola forgive you. Again, you do you, whatever your belief is. But this is the right way of doing it. This is the right way of doing it. कहाँ देखना है हमको दुआ कराते हुए? क्या हम मुखी साहब की आंख में देखें, ऊपर देखें, मौला बाबा के फोटो की तरफ देखें, नीचे देखें, आंखें बंद कर लें? अगर हम माफी तलब कर रहे हैं और वाकईअन हम यकीन करते हैं कि हम गुनहगार हैं, जो कि हम हैं, तो फिर उस शख्स की आंख में आंख मिलाकर दिल में माफी मांगते हुए कि मैं गुनहगार हूं, महसूस करते हुए, विद दैट फीलिंग आप माफी मांगे, ताकि मौला आपको माफ करे। याद रखिएगा, माफ करने वाला वो है। जब आंख से आंख मिलाते हैं, तब जाकर आप अपने दिल में महसूस करते हैं कि वाकई अन में गुनहगार हूं, तब जाके मौला आपको माफ करता है। क्योंकि अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो हम माफी तो मांग रहे हैं, जबान से बोल तो रहे हैं, हमारा दिल उसके अंदर नहीं है, हमारा दिल उसके अंदर नहीं है, हमारी नीयत नहीं है वहां पर। आखिरी बच गया तस्बीह, जिक्र बिफोर दी दुआ। ये जरूरी है कि हम जमात खाने जाकर 2-5 मिनट, 10-15 मिनट पहले कुछ जिक्र करें, कुछ तस्बीह करें, कुछ सजदा करें, ताकि हमारा जो ध्यान है वो इमाम की तरफ हो जाए, ना कि बैठकर इधर उधर बातें करें। आप जाएं, गिनान में शामिल हो जाएं, तवज्जो से गिनान को सुने और साथ साथ में पढ़ें, अपनी तस्बीह को करें, अपने मौला को याद करें। आप तस्बीह उठा लें, मौला को याद करें, ताकि आपका जो ध्यान है वो इमाम की तरफ हो जाए। और इंशाल्लाह, there was one more question. I don't know if you have a time. I truly wanted to do this one. Someone asked about the wisdom of Ya Ali Madad. Wisdom of Ya Ali Madad. And I promised that I would do it today. But if you would excuse me, and if you would give me a chance to come back so we can do a good job talking about Ya Ali Madad. We will start our next session with the wisdom of Ya Ali Madad, with your permission. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you for joining us. I truly appreciate those who have attended and those who have wrote these questions. All three of these are the questions. Because without your attention and without your question, we cannot do this. We are together in this ilm and we are together in learning, inshallah. I am learning from you, and let's do this two-way street. We learn from each other. Ji, let me stop here. Ji sir, subhanallah sir, subhanallah. Friends, please share your questions in the chat, or you can use the hand raise feature to ask the question. So we have one question in the chat. Friends asking, is it okay to do tobo twice before dua and after for sins committed during Jamaat Khana? See, now this person has truly spoke like a Khoja. That is a great question. I know I'm taking it lightheartedly. કે ખોજો જી છે ને
એ ક્યારે બી પોતાનું નુકસાન ના કરે. Right? That is so true. Look at that is a very good question, matter of fact. If we have gone to Jamaat Khana early enough, if we have done our Giryazari and Tobo Tobo, and if we have done our dua correctly, and if you still feel that there is a possibility, unless you already know that during the dua you were thinking about somebody, or before the dua and after the dua you were involved in the gossiping and backbiting, then I think that's a great idea. But if you feel that after all this purification, you still need to ask for forgiveness, why not? Sure. Don't let anyone stop you. If this is how you feel, of course, 100% do it. It's better to be safe than sorry. Surely you should do it. क्यों नहीं भाई? अगर हमको लगता है कि ये सारी तस्बीहात गिरियाजारी दुआ पढ़ने गिनान पढ़ने के बावजूद गुनाह बाकी रह गए हैं या और गुनाह हो गए हैं, दुआ पढ़ते पढ़ते किसी की बुराई को सोच लिया या जानबूझकर हमने किसी की गिला गिबत कर ली, जमात खाने से पहले जमात खाने के बाद, तो जरूर आप दोबारा से जाकर तौबा कर लें, उसमें कोई भी मसला नहीं है. अगर आपको फील होता है तो आप जरूर कराएं, इसमें क्या मसला है. बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई. एक अच्छा काम करने में क्या मसला है? अगर आपको फील होता है कि गुनाह हो गया है, याद रखें अगर इंटेंशनली जानबूझ के किसी की गिला गिबत कर ली, किसी की बुराई कर ली, तो फिर जाकर तौबा करने से कोई फायदा नहीं है. आपने अपना रुपया भी घुमाया और मुखी साहब का वक्त भी जाया किया. अगर आप जमात खाने आकर जानबूझकर बैठकर गिला गिबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का पर हंसते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, तो फिर तौबा में कोई फायदा नहीं है. हाँ, अनजाने में हो गया है तो बहुत अच्छा अमल है, और वैसे भी अच्छा काम करने में क्या मसला है. आप 2 मरतबा कराएं, 3 मरतबा कराएं, कौन मना करता है आपको? और बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कराएं. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. जी. Ji sir, subhanallah sir. So another question we have, can we ask forgiveness for absent member of a family? Of course, as for yourself, as for whomever is not Jamaat, why family? As for the entire Jamaat, as for all of your friends. Remember, it does not cost you anything. Ask for the forgiveness of your family, your friend, entire Jamaat. Of course, absolutely. Yes. Ji. All right, so we don't have a question in the chat at this time. Ji Gulzar, please unmute your mic. याली मदद. याली मदद. सर मुझे ना 2 क्वेश्चन पूछना है. एक तो ये कि सर जब गिनान चलते होते हैं ना, तो तब अपन है ना तस्बीह अगर पढ़ते हैं ना, तो फिर अपन गिनान के वर्ड्स पे फोकस नहीं कर सकते हैं. तो एक तो गिनान चलते रहते हैं तब उस पे वर्ड्स पे फोकस करना, लेकिन कुछ गिनान ऐसी लैंग्वेज है कि जो अपने को समझ नहीं आती है मुझे, तो वो टाइम पे कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि पीर माँ बाप अपने को कुछ सिखा रहे हैं, तो वो टाइम पे कैसा अपना मतलब फीलिंग होनी चाहिए या क्या तस्बीहात होनी चाहिए सर? तो यहाँ पर एक्चुअली 2 बातें हैं कि तस्बीह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. पहला ये सवाल था, ठीक है ना. तो याद है, इसलिए हम 15 मिनट पहले गए थे कि हम सजदा कर ले, हम तस्बीह कर ले,
और फिर गिनान के अंदर शामिल हो जाएं। यानी कि क्या हुआ कि इनफरादी तस्बीह भी हो गई और अब मिलकर हम गिनान भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए जमात खाने जल्दी जाना जरूरी है। अगर आप ऐसे जमात खाने में जाते हैं जहां पर 15 मिनट पहले गिनान शुरू होता है, तो आप जमात खाने कितने बजे जाएंगे? कितना जल्दी जाएंगे आप? 30 मिनट हाफ पहले एन जाएंगे। आवर। यस। हाँ, अब आपका सवाल का जवाब पूरा हो गया। देखा, आपके सवाल का जवाब आप ही के पास था। जी शुक्र सर। और सर एक और पूछना था कि जैसे घर में पेट एनिमल्स होते हैं तो बीमार होते हैं या डेथ होती है, तो उसकी दुआ भी करा मतलब उसके लिए भी अपन माफी मांग सकते हैं या जमात खाने में सर? I don't know how to answer that. जो आपको अच्छा लगे आप करें। थैंक यू सर। शुक्र अली अल्लाह सर। थैंक यू सो मच। जी मदद सर, मेरा ये सवाल है कि अगर हम जमात खाने में दुआ के दौरान हमें ऐसा महसूस होता है काफी देर के बाद कि 2-3 पार्ट निकल गए और मेरा ध्यान उधर नहीं था, तो हम दोबारा पढ़ सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जहां से आपका ध्यान लग गया वही काफी है। कि देखें, नियत जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी दुआ के अंदर। अगर आपकी नियत दुआ पढ़ने की थी तो वो कबूल हो गई दुआ, वो तो दुआ कबूल हो गई। अब आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ध्यान हट गया तो जहां पर दुआ ध्यान लग गया वही गनीमत है हमारे लिए। और दुआ तो एक दुआ है। आप दिन में 3 मरतबा क्यों 6 मरतबा पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? नाचीज खुद को याद है कि जब लंबी लंबी ड्राइविंग में जाते हैं तो कितने घंटे होते हैं ना हमारे पास? 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। जब भी आपको मर्जी आए आप दुआ पढ़े, क्योंकि दुआ तो एक आपके और इमाम के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है। आपको जब भी दिल चाहे आप 1 मरतबा क्या 4 मरतबा दुआ पढ़े, कोई मसला नहीं है। अच्छा चीज करने में क्या मसला है? बिल्कुल पढ़े आप, बेशक पढ़े आप, मगर आपकी जो दुआ की नीयत थी ना वही काफी है आपके लिए। जी थैंक यू सर। और मेरा एक और सवाल है कि जैसे हम घर में दुआ पढ़ते हैं तो दुआ जी के दौरान बाज़ औक़ात कुछ लोग या मैं भी कभी इशारे से हमने किसी बच्चे को खामोश कराया या दरवाजे पे बेल हुई, हमने जाके दरवाजा खोला, तो ये सब जायज़ है या हमें फिर से दुआ पढ़नी चाहिए? वही सवाल का जवाब जो पहले दिया। आपकी नीयत क्या थी? जी, दुआ आपकी की। नीयत क्या थी? आपकी नीयत कबूल हो गई, बात खत्म हो गई। फिर हमें थैंक यू। फोकस जो है ना वो यहाँ देना है कि हमारी नीयत क्या थी। जी थैंक यू। Sir, we have a few more questions. So I know this question you touched on last Sunday class. My friend wants to say, how do you politely tell people when they are talking in Jamaat Khana and someone is having concentration in zikr? जी, so you can do 2 things, right? Either इशारतन आप बोले भाई साहब मैं तस्वीर कर रहा हूं, और move away, go sit somewhere else, right? If you cannot ask politely, just move away. Or you can say it even without the word. You can say इशारे से भाई साहब मैं तस्वीर कर रहा हूं, and they will understand what you are saying. Say it politely, say it nicely. If they do not stop, you move away. Be humble. You move away, go sit somewhere else. जी Yes, the question we have. When asking for forgiveness of absent members, do we need to state specifically or can we have niyat in our mind? नियत
नियत, नियत। जी। Okay. All right. So another question: if I'm late in first dua, can I say that in my heart during Ginan or Farman? My personal opinion, no. What you are just doing, you already missed first dua. Why? Why did you even miss first dua? And then on top of that, while Ginan is being recited, you are saying your dua, now you missed your Ginan. And then you're going to say your Ginan while Farman is recited, now you missed your Farman. While you are thinking of Ginan, your next dua has started. Makes no sense, right? So what is logic tells you? Tell me. What does your logic tells you? Logic tells you that whatever reason you missed your dua, first you should ask yourself a question. Why did I miss my dua? That would be the first question I would ask myself. Then you start wherever you start from. Meaning, if it's a Ginan, get yourself involved in the Ginan, Farman, second dua, and then you have a time to say your first dua. Remember? Then you have a time to say your first dua. Otherwise, you are substituting one for the other. You will never catch up. Because every time you are saying your dua, you're missing your Ginan. Now you're saying your Ginan, you're missing your Farman. Now you're saying your Farman, you're missing your second dua. Logically, it makes no sense. See, our tariqah is a tariqah of logic and intellect. What does your logic tells you? G. All right. So, friends, please unmute your device if you have any question. मैं एक सवाल पूछूं? याली जी, मदद। बेशक, याली मदद। Aziz sir, what about all those times जान के या mistakenly हम दुआ मिस कर गए हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? When we were young, when we were whatever, ऐसा कुछ। पीछे किसी जमाने में ये बोल रहे हैं आप? ये जमाने में मगर पिछले दिनों में, हाँ, पिछले यानी सालों पिछला में। जमाना हो गया ना, yesterday Okay, and everything else, पिछला जमाना हो गया, राइट? माजी okay. में, हम्म। ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना है आपको। रिमेम्बर आप मुखी साहब के पास गए थे, तो वो तस्वीरदार बंदो सरता बागुनेगार, उसमें वो सारी माफी नहीं आ गई? याद है आप मुखी साहब के पास जब गए थे? Yeah. Logical, our tariqa is the tariqa of logic. Always use logic. Always. And your answer is with you. जी, ये बहुत अच्छा सवाल था। आई होप के सब ने सवाल सुन लिया और सब सवाल को समझ भी गए। जी सर इसको अगर उर्दू इंग्लिश में भी समझा दें। जी, so my sister asked a question that what about the dua that we had missed when we were young, when we were busy in our work, for whatever reason, we missed the dua 10, 100, 1,000 times during our lifetime. What about that? My answer was very, very simple. Very simple. When you are asking for the forgiveness of the Imam, Tobo Tobo Tasidar, Bando Sarta Pagunegar, Yashatu Bakshe, Bakshanar. All of the sin of the past is forgiven. That's it. You don't have to do anything. If you believe your sins are forgiven, don't worry. Imam himself has said, literally, Imam put his hand like this. Whatever happened in the past is in the past. We start fresh today, right now. Moving forward, we start fresh. G. जी सर, सुभान अल्लाह सर। जी
Malik, please go ahead. या अली मदद, या अली मदद, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी। या अली मदद मिशनरी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। लेकिन बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरे इल्मी फ्रेंड्स के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम दुआ पढ़ने के लिए जमात खाना जाते हैं और हम लोग प्रीटी श्योर है कि शायद हम लोग पहली दुआ मिस करेंगे, तो इज इट ओके कि हम जहाँ रास्ते में है वहीं पे अपनी पहली दुआ पढ़ ले, तब तक कि हम इंशाल्लाह दूसरी दुआ में पहुंच जाए? इज इट ओके? बेशक, कभी ऐसा भी होता है कि बेशक, 7:30 की दुआ है और हम 7:15 बजे रास्ते में है और लगता है कि नहीं पहुंच सकेंगे, तो इज इट ओके कि जमात से पहले बेशक, पढ़ ले हम? ओके बेशक, बेशक। ओके ओके, वापस शुक्रिया। इसका जवाब यही है, नियत क्या है आपकी राइट दुआ पढ़ने की? बात खत्म हो गई, राइट? नियत, 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 राइट, ये आंसर है इसका। जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच या अली मदद। वेलकम या अली मदद। मदद सर। या अली मदद, अच्छा, मैं जब दुआ पढ़ती हूँ तो अगर फोन बजता है तो मैं नहीं जाती, अगर दरवाजा नॉक होता है तो मैं जाना पड़ता है कभी कभी जवाब देने के लिए। तो फिर मैं वापस आके सारी दुआ वापस पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने दुआ हाफ में मैंने वो कर दिया, मिस कर दिया, तो मैं सारी वापस पढ़ती हूँ ठीक है, पहले से। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बस है। अब अभी आपने बोला कि ऐसा सारी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो क्योंकि आपकी पढ़ने नियत की। तो थी ना दुआ पढ़ने की, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, पर ऐसे 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 पढ़ने की जरूरत नहीं होती, राइट? क्योंकि आपकी नियत क्या थी? आपकी नियत ये नहीं थी कि बीच में कोई दरवाजे में नॉक करेगा और मैं खोलूंगी दरवाजा, अच्छा, राइट? हाँ, तो नियत, कभी नियत, नियत, दैट इज द आंसर। जी, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। Okay, so we still don't have any questions in the chat. Ji, Shamim, do you have any question? Okay, so it seems like it was accident. Okay, friends, please unmute your device if you have any questions. याली मदद। अच्छा, आप एक वर्ड का यूज किया कुर्बत, तो उसका मीनिंग आप समझाएंगे? कुर्बत, कुर्बत का मतलब होता है करीब आना। ओके इंग्लिश में नियर कहते हैं इसको, क्लोजर। ओके, थैंक यू सो जी, मच। आप म्यूट कर लें प्लीज। Yes, sir, looks like we don't have any questions in the chat. All right, if that is the case, we can stop here. Thank you everyone. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. We will do our Ya Ali Madad session next थैंक Sunday. यू। Ya Ali Madad. Thank you Ya Ali much. Madad. या अली मदद। याली ये मदद। वाला